Alright guys, welcome back to our channel and कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सबको बोला था जे से क्वेश्चन पूछो जो जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं एंड वी विल बी आस्किंग जे फॉर द आंसर्स एंड आई रिसीव्ड लॉट ऑफ कमेंट्स नहीं ऐसे नहीं दिखाने नहीं है कैंडिड पूछने हैं ऑन द स्पॉट देखते हैं आपको आते हैं या नहीं आंसर्स What kind of questions are these? I'll tell you. चलो Okay. चलो देखते हैं. चीटिंग नहीं करनी ठीक है मेरे फ़ोन में नहीं देखना ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू यू मेंटेन अ हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस वाइल मैनेजिंग योर करियर एज एन इन्फ्लुएंसर एंड योर पर्सनल लाइफ आप तो इन्फ्लुएंसर नहीं हो मुझे लग रहा है ये मेरा क्वेश्चन मेरे लिए आपके क्वेश्चन लिए है मेरे लिए ओके ये फिर मैं ये आज का सेशन मेरे लिए नहीं है जे के लिए तो हम सारे क्वेश्चन जे से पूछेंगे चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन अनुप्रीत ने पूछा है आई वांट टू आस्क कि आप कैसे कर लेते हो सब हैं ये भी मेरे लिए यार मेरे लिए नहीं जे से पूछने हैं आपको क्वेश्चन चलो थर्ड क्वेश्चन हम पूछते हैं अबे ने पूछा है प्राइवेट जेट में कितने सीसी का इंजन होता है आस्क जे प्राइवेट जेट अच्छा मुझे पूछना है मुझे क्या पता प्राइवेट जेट तो आपने लेना है नहीं तो आपको पता होना चाहिए ना नहीं तो नहीं पता आपको नहीं पता ओके नहीं पता गाइस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नूनू ने पूछा है प्लीज आस्क व्हेन आई विल सेल प्रॉपर्टीज लाइक यू जॉइन रियल एस्टेट 8 months ago दैट्स फॉर यू यार ऐसे मत करो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रुपिंदर ने पूछा है हाउ यू मेंटेन सच अ ब्यूटीफुल फिगर जिम और वर्कआउट शेयर योर फिगर रूटीन कौन सा फिगर आपके लिए भी ये भी आपके लिए था ब्यूटीफुल फिगर आपका भी तो ब्यूटीफुल फिगर है मेरा ठीक है मेरा आई एम एवरेज बिल्ड चलो ठीक है वैसे बता दो कि आप कैसे मेंटेन करते हो देयर इज अ डाइट प्लान दैट आई हैव राइट व्हिच madam over here got us hooked on which is good actually I lost maybe from that diet plan I'm saying maybe 5 kilos right in the past 2 months no 11 kilos you no, were no, what I was going to the gym before that and I was still eating like okay food but this diet plan is really good I think we'll share it actually we'll share it with yeah them it's such a good diet plan I mean like कोई ऐसे टेंट्रम नहीं है इसमें ड्रामे नहीं है वेरी सिंपल डाइट प्लान आई थिंक हमें एक और ब्लॉग बनाना चाहिए हमारे डाइट पे है ना sure we should show Let's do people that. like and it's so simple you don't have to put extra efforts घर पे जो सामान है उसी से आप अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हो it's just कि वो क्वांटिटी फूड जो क्वांटिटी होती है ना मील क्वांटिटी वो आपको स्मॉलर करनी पड़ती है एंड यू जस्ट हैव टू लाइक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट अगर आप माइंडसेट बना लो कि यू वांट टू लूज वेट एंड यू वांट टू स्टिक टू अ गुड हेल्थी डाइट नोबडी कैन स्टॉप आप घर पे बहुत अच्छा कुछ बना सकते हो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है lightning queen say ask Jay if someone is stuck in a middle of nowhere and after all the efforts he isn't able to come out from there no matter how hard he try just failure is the one thing always come in hand what should a person do in that case wow That's such a I don't know if that's a deep question or it's a trick question, but if somebody's stuck in somewhere, it depends on, is he stuck in a desert? Is he stuck on an island? Like what are we talking? Are we talking location-wise or is he stuck somewhere in life? Right? I think it's life. If somebody's stuck somewhere in life and there's no way, they can't find a way out and failure is coming to their mind, I think they should take a break from everything that's going on and really look deep into their mind on what their actual goals are and actually when you start thinking about your goals then everything else follows right so the way to fill positivity into your life is to first understand your goals very deeply and why you want them right the why is very important and then make plans in order to achieve those goals then you just have to repeat that every single day I think or not even every single day but every few days at least so you're on track so that's how I would say if you're stuck somewhere in life sit down get away from your life like your normal day to day take a few days off
and then do that. And I would say, if needed, you should seek help. You know, you should talk to someone, your family, friends, or maybe someone who you trust, you know, because sharing your problems or maybe your whatever situation you are in, मतलब solve नहीं होती problems share करने से, but at least you feel light. Maybe you will find a way to come out of it, you know. So I would say seek help as well Sure. if it's needed. If it helps, yes. Yeah, exactly. चलो जी, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस क्वेश्चन हो गया था. Yeah. वी वेंट ऑल डीप इन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इधर नहीं देखना कैमरे पे. मांगट जी ने पूछा है, हरजीत मांगट जी ने, मैं ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ. ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੱਦੂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕੋਫਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ਕੱਦੂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ. ਕੱਦੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ. ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਦੂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ. ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦਾ. ਤੇ ਕੱਦੂ ਕੋਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ, ਮੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਸੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਣੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕੋਫਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ. ਚਲੋ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗੋਸਲ. ਗੋਸਲ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, here is my question for both of you. When poison expires, is it still poison or no more poisonous? Poison wouldn't have an expiry date. So question is wrong. Question is wrong. चलो, next question. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ 11 UK, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਵਾਓ. ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਪੇਸਸ਼ਿਪਸ. ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪਸ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਸਪੇਸਸ਼ਿਪਸ ਉਹੀ ਰਾਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ. ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਫਾਸਟ. ਆਈ ਥਿੰਕ SpaceX ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਲਕਨ ਹੈਵੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, forgot the name of the spaceship now. Elon Musk ਵਾਲਾ? Elon Musk ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, SpaceX. ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, you won't believe, it's more than 21,000 kilometers per hour at least. Because ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜਨ ਆ? I think 21 engines. Imagine 21. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੌਕਟ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ 21 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, I think, or more, even more. Yeah. Okay. पता चल गया आप सबको? स्पेसशिप सबसे दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज़ है, स्पेसशिप. So एक इस तो भी तेज हैगी आ चीज़. It used to be the written word. Written word मतलब ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, that travels faster than that. And then obviously you have light travels the fastest, right? And then anyways, fuck it. मैं ज़्यादा ही ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. Okay, ज़्यादा deep चल गए हाँ. Come back. Okay. Come back. Okay, next question. Real estate गौरव पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी age? Tough one. I think 61, 62. Maybe. Okay. Maybe. आप बताओ कि क्या एज है. अगर गलत गेस किया तो भी बताना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेया जी पूछ रहे हैं, आस्क हिम हाउ टू कीप रिलेशनशिप ऑलवेज हेल्थी. I'm ready for that one. I think the first thing is patience. You need a lot of patience because you're two different people. You think differently, and as long as you have the same goals, and you can pretty much solve anything because you're going in the same directions. That's the most important thing. Second thing is patience and communication. If you don't communicate with your partner, if you don't have the patience to listen to them, then obviously there's going to be arguments and fights, and that's going to happen anyways, but you just have to, I think at least one of the partners have to be that. Yes. हम दोनों में से कौन है? Me, of course. He has patience, like real time. Yeah. Thank you. It's Thank okay. you for being so patient. No problem. I swear, I was a very, very short temper person. And since I met him, मैं बहुत cool down हो गई हूँ.
and he has all the patience in the world. Like kuch bhi ho jaye, he will handle all the situation very calmly. He will never react. He will never yell at me. मतलब आज तक कभी भी आपने मेरे पे चिल्लाया नहीं है ना? Never. Probably not. No. Maybe He once. never got angry at me. No. No, you did not get angry at me ever. And touch wood, ऐसा ही रहे. I'm trying to change as well. See, I've been like, you know, it's not that मैं intentionally short temper होती हूँ या फिर intentionally मैं अपनी tone change करती हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि you've been doing that for so many years and you feel it's normal. So my subconscious mind thinks that being rude या फिर being short temper is normal, but it's not normal. I understood that it's not normal after I met Jay. So now I'm trying to change myself. I think मैं बहुत पहले से बहुत better हूँ, है ना? पहले when I met him, I used to get angry on everything, you know. I would fight with everyone, but not anymore. Okay, And good, I good. became kind person. Good, You're good. making me kind person. All right, good. Thank you. No problem. So next question, देव सिंह ने पूछा है, how did you get Manpreet Kaur? By luck. No, it was what do you call it? It was by luck, I think. Yeah, I was destiny. lucky. Destiny and luck. That's all I'll say. Yeah. Anyways, good question. But ज़्यादा कुछ निकलवा नहीं पाए हम उनसे. निकलवाएंगे, रुको और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्या पूछ रहे हैं, चलो ये पूछो कि पहली बार कद मिले सी, फर्स्ट डेट विच डे एंड टाइम आल्सो. Time as well. You have 30 I think seconds. I know. have- September 7, we met in the evening around, I don't know, 8 o'clock. 8 o'clock, yeah. Really? We were supposed to meet at 6 o'clock, but then I was at work and I got late. Okay. And I texted him like, oh, I'm a bit late, so can we do it at 8? I think 8:10, Yeah. first time when I met you. Yeah, probably. I think you were wearing similar color when we met, Really? the day we met. Maybe. You were so tall. I was like, what? ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ. ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ. Anyways, next question. Yeah. Okay. Miss Shukla पूछ रहे हैं, how does female brain works? Please record what he says and post. I don't think anyone can tell you that. Not even a female can tell you that. नहीं, थोड़ा तो Good बताओ. luck. नहीं, but female brain, I think, is very, very complex, more complex than a man's brain. There's a lot going on. Let's just say that. I would say it's like you're flying on a plane and there's a lot of wind, and you're hitting everything on the way to the There's no destination. You're just hitting everything, and you're flying like this. That's how it is. But you handle women very well. You know what they like, how to treat them, and he has staff under him, right? Like इनके अपनी team है, तो a lot of them are female, right? And he asks me questions, some weird questions like, oh, why do you do this? तो मैं पूछती हूँ कि why do you ask me, है ना? वो बोलते हैं कि मेरे ऑफिस में फीमेल स्टाफ है, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ फीमेल ब्रेन वर्क्स सो दैट ही कैन हैंडल देम अकॉर्डिंगली, यू नो. या रिमेंबर यू आस्क्ड मी वंस. Yeah. Correct. I got it. अनामिका दास जी पूछ रहे हैं, हाउ डिड ही मेक हिज मनी? By being your sugar baby. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ. That'd be great, right? Sit at home, collect the money. Oh yeah. I wish I had that much money. ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਬੇਬੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, done. Okay. Done. Let's do that. Okay, next question ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂਗੇ. Miss Ayushi Soni पूछ रहे हैं, I think you should ask him some difficult question. Okay. I'm sure he will not be able to answer until he Google it. Oh. So any question is for Jay. Ask the name of President of India. No way. मुंह नहीं काला कराना मेरा है. No, I really don't know. Don't know the president of India. You're Indian. She's a lady, I think. Or maybe not. She's a lady? South Indian lady. South Indian lady? No.
Not it used to be when I was in school, when I was going to school in India, Pratibha Patil. प्रतिभा पाटिल Pratibha Patil ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਯੂ ਲਾਈਕ ਹਿਮ? I don't care. I mean, You support not him? in no, I don't think so. Only he's done a lot of wrong things. I think he's freed up Canada too much. ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। You're right. ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। What are your views about On what? Canada anymore? Like Canada? Yeah. Look, there's an opportunity everywhere you go. It doesn't matter where you are. So if I was in Canada, I would find something to do that would help myself. And I don't think, for me personally, it's not a problem. And I grew up there, so it's a good connection with the country. But dekho, majority of people won't be able to have a good life because a lot of taxes there. Once you get hooked into the system, you're trapped basically, right? Mortgages and loans and whatever else you have, those are monthly payments. Once those are hanging on your head, it becomes very difficult. And on top of that, then you have tax. So yeah, it's much easier here. At least we know, okay, if we are paying for something monthly, like I don't have any monthly payments for anything, right? Everything is, as you know, is paid by cash, and we don't take loans or anything like that. So here, I think that's the biggest difference for me. मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये सब खुद से बोल रहे हैं। ये लोग मुझे बोलेंगे कि तुम कनाडा को से इसका भी सिखा दिया। नहीं, इनको खुद को ही पता है ये सब। No, what I'm saying is, The whole world knows. if you're in Canada, you can still have a good life, but you have to make a lot of money. Yeah. ठीक है? But here in Dubai, you don't have to make lot of money to live a good life. You can live a very decent life with a decent salary or Unless you're income. not money-minded. Like me. Yeah, you're not money-minded at all. I am. I know you are. I love I'm just money. kidding. I love money. No, what I'm saying is, if let's say I went to Canada, I bought some land. Land is cheap there, very, very cheap, and became a farmer. And if I was happy doing that, then that's great too. Then you don't need a lot of money. You just need that lifestyle, right? Great. Next question. Yes. हाँ जी दस। आदित्य पूछ रहे हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी कौन सी? मेलोडी चॉकलेट होती है ना, आपने देखी नहीं वो एडवर्टाइजमेंट? इंडिया में एडवर्टाइजमेंट आती थी जब हम छोटे होते थे। Okay. उसमें बोलते थे ऐसे, वो चॉकलेट खा के लड़की बोलती थी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है सर? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मैंने नहीं देखा। आपको मैं इनको पहले वो एडवर्टाइजमेंट हाँ, दिखाती वो हूँ, दिखाओ। फिर हम इनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम मुझे लेना नहीं आता इनका। सिस्टर, आई जस्ट वांट टू आस्क, like you said, golden visa is valid for 10 years, but what about a resident? Can someone get PR in UAE? Look, there have been cases where they've given the citizenship, but very rare, and it just won't happen, okay, for everybody. So PR तो मिलती नहीं है, ठीक है? बाकी residence visa you can get if you're an employee, if you're an owner of a company, there's so many ways of getting a visa here now. So आप research करो, search on Google, right? Yeah. Best way to do it. And I said that in hundreds of my videos अच्छा। कि गोल्डन वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है, आपको पीआर दुबई में नहीं मिलती। हर किसी को पता है कि तो दुबई वो में देखो। पीआर नहीं मिलती। वो देखो। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन माही जी पूछ रही है। ओके, अच्छा उसे पूछो, एक अगर लाइफ में कभी कोई ट्रेजेडी हो गई और मैं कमा नहीं पाई, तो जितनी सक्सेसफुल जहाँ आज हूँ उतना ना हुई तो भी मेरा साथ दोगे? अच्छा, आपकी बात। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अगर लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ और मैं जो आज कमा रही हूँ, या जितनी सक्सेसफुल आज हूँ, अगर मैं उतनी नहीं हुई, फिर मेरा साथ दोगे? We are forever. हाँ, Doesn't matter where you go, up, down, turn around. कुछ भी हो जाए, we are together, okay? या डेफिनेटली। एंड सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है उन्होंने, माही जी नहीं। अच्छा जी। What if I am not able to give you a child? Will you stay with me?
Of course. Not a problem. Yeah, that's it. Bus. Okay, okay. Not That's a it? problem. Yeah. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तरुण जैन पूछ रहे हैं मुझे ये पूछना है कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहा व्हाई Well, obviously you have to. You're doing it the wrong way, right? Introspection बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अब देखो कि अब पहले तो अब देखो क्या गलत कर रहे हो. Figure that out first. Because success is a result of not just hard work but smart work. So if you're not working smartly as well as working hardly, then success won't come to you. I mean, but not success, but success is like it's like a marathon, right? You can't just find it on the first day. You have to keep going until you reach it. So consistency is important. But you may be doing hard work for no reason. You may be running around in the circle, right? You want to go straight to the destination, which is success. So to do that, you need to work smart as well. ग्रेट ओके ऑलराइट हरमर पूछ रहे हैं प्राइवेट जेट लेने के बाद क्या करोगे उसको रेंटल पे डालोगे या प्राइवेट जेट खुद यूज़ करोगे अब तो ये आपके लिए ना सवाल. हाँ वो मैं खुद यूज़ करूँगी रेंटल पे नहीं डालूंगी बड़े लोग रेंट वेंट की हम टेंशन नहीं लेते पैसे की कमी नहीं है ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर Disappointing you. Don't Yeah. do that. It's okay. नहीं, it's, No, don't say that. You never disappoint me. I know, I'm just saying. That would be my No, biggest you fear. always make me proud. I know I won't, but it's there, right? Okay, why would you say that? कोई गल नहीं. Do I make you feel? No. नहीं, रोना नहीं. नहीं. It's okay. But No problem. you never make me disappointed. Okay, we are not perfect. We're not. We both have flaws. Yes. And we'll work it together. Okay. Yeah. So For never sure. never think that you will ever disappoint. Even if you disappoint me, it's okay. I do that sometimes. I disappoint you. It's okay. So it's okay. I think it's a good fear to have. Yeah. It's a good fear to have. ज़्यादा इमोशनल कर दिया आज आपने चलो गाइस आज के लिए इतना ही आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं जो इंस्टाग्राम पे आए थे बट अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछो और अगर आपके मेरे लिए कोई क्वेश्चंस है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो बट मेरा नाम लिख देना पीछे अगर मेरे लिए क्वेश्चन है सो दैट नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फिर जे कैन आस्क मी क्वेश्चंस Sure. जो आप मेरे से पूछना be चाहते fun. हो yeah Okay. alright then Okay, guys, please like, share, and subscribe. As you know, this is Manpreet's channel, right? This is your channel, right? Yes, Okay, yes. okay. Definitely like. हाँ and, जी subscribe. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना Thank you. थैंक यू बाय बाय